Hello students, objective of today's math lab activity is to draw histograms for classes of equal widths and varying widths. Prerequisite knowledge for this activity: you must know knowledge about collection of data and concept of histogram. Materials required for this activity: graph paper, geometry box, adhesive fevicol or gum, sketch pens, a pair of scissors, a white sheet of paper. Procedure: first step: firstly collect the data, then make a frequency distribution table. Case 1 for classes of equal widths. Here one frequency distribution table is given that is related to lifetime of lamps in hours and number of lamps. You can see here 300 to 400 there are 40 lamps. It means there are 14 lamps which have lifetime between 300 to 400 hours. Similarly, 400 to 500 hours, 56 lamps. 500 to 600 hours, 60 lamps. 600 to 700 hours, 86 lamps. 700 to 800 hours, 74 lamps. 800 to 900 hours, 62 lamps. And 900 to 1000 hours, 48 lamps. Case 2 for classes of varying widths, where class sizes are different. Here first table in which age in years and number of children is given. 1 to 2 years there are 5 children. 2 to 3 year range there are 3 children. 3 to 5 year range there are 6 children. 5 to 7 years 12 children. 7 to 10 years 9 children, and 10 to 15 years 10 children, and 15 to 17 years 4 children. Here you can see that class widths are different. For first class interval, class size is 1. For class second, class size is 1. But for third class 3 to 5, class size is 2. For fourth class 5 to 7, class size is 2. For next class 7 to 10, class size is 3. And for next class 10 to 15, class size is 5. And for next last class 15 to 17, the class size is 2. So here you can see that the class widths are different. So we need to adjust the frequencies. Then adjusted frequency का formula है, adjusted frequency is equals to minimum class size upon class size of given class into frequency of given class. So we will create a column for adjusted frequencies, which will be the length of the rectangle, because in histogram area of rectangle is proportional to the frequency. So adjusted frequency for first class, minimum class size is 1 upon class size of given class is also 1 into class size into frequency of given class is 5. Then adjusted frequency also comes 5. For next class, minimum class size 1 upon given class size 1 into frequency of given class is 3. It equals to 3. Minimum adjusted frequency is same as frequency given. In next class 3 to 5, minimum class size 1 upon class size of given class is 2 into frequency of given class is 6. Then half of 6 is equals to 3. Here frequency is 6 but adjusted frequency is 3. In next class 5 to 7, minimum class size is 1 upon class size of given class is 2 into frequency of given class is 12. Then half of 12 is equals to 6. Frequency is 12 but adjusted frequency is 6. In next class, minimum class size is 1. Class size of given class is 3 into frequency of given class is 9. That is equals to 3. Here frequency is 9 but adjusted frequency is 3. Next class, minimum class size 1 and class size of given class is 5 into frequency of given class is 10. 1/5 of 10, it is equals to 2.
Here frequency is 10 but the adjusted frequency is 2. In last class 15 to 17, here minimum class size 1 and class size of given class is 2 into frequency of given class is 4. Then half of 4 is equals to 2. Here frequency is 4 but the adjusted frequency is 2. So while drawing the graph, we will take length of rectangle or height of rectangle as adjusted frequencies. Now, next step, take a graph paper and paste it on a white sheet of paper. Now, draw two perpendicular axes, x-axis and y-axis on the graph paper. Then, choose an appropriate scale and mark classes on x-axis and frequency on y-axis. For case 1, draw rectangles of equal width because class size are equal and heights of given frequencies on corresponding class interval. See figure. Here, number of lamps, that is frequency, is marked on y-axis and lifetime, that is class interval, is marked on x-axis. Scale chosen here is on x-axis 1 unit equals to 100 hours and on y-axis 1 unit is equals to 10 lamps. Now, for case 2, draw rectangles of heights of adjusted frequencies on corresponding class intervals. You can see the figure. On this graph, you can see we have marked age in years on x-axis. These are class intervals and number of children, that is adjusted frequency, on y-axis and scale chosen is on x-axis 1 unit is equals to 2 years. ठीक है, यहाँ पे हमने 1 यूनिट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 ईयर्स एंड ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 चाइल्ड. प्रोसीजर में हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें डेटा कलेक्ट कर लेना है. अगर आप अपने आसपास डेली लाइफ से रिलेटेड कोई डेटा कलेक्ट कर ले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. उसके बाद उस डेटा को हमें टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है. ठीक है, ग्रुप डेटा बनाना है और उसको फिर हमें अरेंज कर लेना है. उसके बाद हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना है. ग्राफ पेपर में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस. उसके बाद ठीक है, यहाँ पे हम अपने डेटा के हिसाब से हम देख लेंगे. जैसे हमारे पास डेटा जो था फर्स्ट केस में जहाँ पे क्लास साइज इक्वल थे वहाँ डेटा हमारा 300 से 400 क्लास इंटरवल हमारे चल रहे थे. ठीक है, तो यहाँ पे हमने 380 किया तो हमने सीधे यहाँ 300 ले लिया. हमने 100 एंड 200 यहाँ पे स्किप किया है. तो स्किपिंग के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक जिगजैग लाइन का यूज़ किया है. ठीक है, उसके बाद हमने सीधे 300 से यूज़ कर लिया 300. उसके बाद नेक्स्ट 400 500 इस तरह से. तो एक्स एक्सिस में जो हमारा स्केल है हमने क्या लिया है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं टाइम इन आवर्स जो कि क्लास इंटरवल है. ठीक है, वाई एक्सिस में हमारा जो कहते हैं स्केल है वो है 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 लैम्प्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डेटा था वहाँ पे हमारे पास मिनिमम जो थे लैम्प्स वो थे 14 और मैक्सिमम जो हमारे पास थे वो थे 86. तो उसके हिसाब से हमने स्केल चूज़ किया यहाँ पे. तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं नंबर ऑफ लैम्प्स को. ठीक है, जिसके लिए हमने 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 लैम्प्स लिया हुआ है. तो इस तरह से हम यहाँ पे नंबर मार्क कर लेंगे. उसके बाद फर्स्ट क्लास इंटरवल 300 टू 400. यहाँ पे क्लास साइज यहाँ पे फ्रिक्वेंसी थी 14. तो यहाँ पे जो कहते हैं बार की हाइट है वो कितनी हो गई है, 14. ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट 400 टू 500 यहाँ पे फ्रिक्वेंसी थी 56. ठीक है, उसके बाद 500 टू 600 यहाँ पे फ्रिक्वेंसी थी 60. 600 टू 700 यहाँ फ्रिक्वेंसी थी 86. 700 टू 800 यहाँ फ्रिक्वेंसी थी 74. 800 टू 900 यहाँ फ्रिक्वेंसी थी 62 एंड 900 टू 1000 यहाँ हमारी फ्रिक्वेंसी थी 48. ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमने पहले केस के लिए जहाँ पे हमारे क्लास साइज इक्वल हैं इस तरह से ग्राफ बना लिया. तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सीधे सीधे हमने बना लेना है. यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमें लेना है क्लास इंटरवल, वाई एक्सिस में हमें ले लेना है फ्रिक्वेंसी. लेकिन जब हमारे पास केस 2 है यानी कि जहाँ पे क्लास विड्थ अलग अलग हैं, ठीक है, वहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस पे तो हमें क्लास इंटरवल ही लेना है, पर वाई एक्सिस पे हमें क्या लेना है, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी. यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी नहीं लेंगे, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी लेंगे, क्योंकि
हिस्टोग्राम के केस में जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, जो यहाँ पर रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, उनका एरिया फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और क्लास साइज इसलिए यहाँ पे क्लास साइज डिफरेंट है, तो हमें फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास हमने एक्स एक्सिस में ले लिया एज इन ईयर्स, जो हमारे क्लास इंटरवल थे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ से 1 यूनिट इक्वल्स टू हमने कितना लिया है 2, ठीक है। यहाँ पे 2 1 यूनिट, फिर नेक्स्ट यूनिट क्या हमने लिखा है यहाँ पे 4, तो यहाँ से हमारे पास 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना है 2 ईयर्स। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से लिया है, तो हर यूनिट हमारी 1 चाइल्ड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला क्लास इंटरवल था 1 to 2, तो यहाँ पे एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी हमारी सेम थी फ्रिक्वेंसी की, वो थी 5, ठीक है। सेकंड क्लास इंटरवल हमारा था 2 से 3, तो यहाँ पे भी हमारे जो क्या था फ्रिक्वेंसी थी, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी सेम थी 3, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास इंटरवल था, जहाँ क्लास साइज हमारा चेंज हो रहा है अब यहाँ पे 3 to 5, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी तो 6, लेकिन जो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी आई थी वो कितनी हो गई थी 3, क्योंकि यहाँ पे विड्थ बढ़ गई है, तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी कम, ताकि हमारा जो एरिया है वो क्या रहे, सेम रहे रेक्टेंगल का, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास इंटरवल था 5 से 7, तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी दी थी वो थी 12, लेकिन जो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है 6। अब यहाँ पे क्या है, ये विड्थ डबल हो गई है, तो जो लेंथ है उसको हमें कम करना पड़ेगा ताकि हमारा एरिया सेम रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी 6 थी। इसी तरह से 7 to 10, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी थी 9, पर एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी आई थी 3, क्योंकि यहाँ पे जो विड्थ है वो कितनी है 3 टाइम्स, ठीक है। 1 2 3, मिनिमम क्लास साइज था 1, तो उसका 3 टाइम्स, तो यहाँ पे जो हाइट है उसकी इसकी लेंथ यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमें सेम करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, तो 9 का 1/3 हो गया था 3, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इंटरवल था 10 से 15, यहाँ हमारे पास फ्रिक्वेंसी थी 10, पर एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी कितनी आई 2, क्योंकि यहाँ विड्थ हमारी कितनी हो गई है 5 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेंथ को एडजस्ट कर लिया ताकि एरिया सेम रहे, तो लेंथ क्या हो गया 1/5 हो गया। उसके बाद लास्ट क्लास इंटरवल था 15 to 17, ठीक है। यहाँ पे क्लास साइज हमारा है 2, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हमें जो दी थी वो दी थी 4, पर एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी यहाँ पे क्या आई थी 2, क्योंकि विड्थ यहाँ पे डबल हो गई, तो जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी हाफ। तो इस तरह से यहाँ पे हमने केस 2, जहाँ वेरिंग क्लास विड्थ है, ठीक है, यहाँ 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 17 अलग अलग क्लास विड्थ हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बार्स के जो कहते हैं यहाँ पे विड्थ है वो अलग अलग है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है। नाउ ऑब्जर्वेशन केस 1, फॉर द क्लासेज ऑफ इक्वल विड्थ्स द इंटरवल्स आर 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900 and 900 to 1000. Here you can see the class size are same for all, that is equals to 100, and corresponding frequencies are for first class interval, that is 14, for second class interval 56, F3 60, F4 86, F5 74, F6 62 and F7 48. For case 2, for classes of varying width, class intervals are 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15 and 15 to 17, and corresponding class size are 1, 1, 2, 2, 3, 5 and 2. You can see class size are varying, not same. Then adjusted frequencies are taken on y-axis. Then adjusted frequencies are F1 5, F2 3, F3 3, F4 6, F5 3, F6 2 and F7 2. Result. We have drawn histograms of equal widths and varying widths by using the collected data. Thank you.